start this. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We start a new topic about the memory hierarchy. Now, when we talk about the memory hierarchy, the first question is why we need a memory hierarchy. Because if you see in my hand, this is a hard disk. Okay? It's a very old hard disk. And you see it has this head, the read-write head. Okay? And it has a magnetic platter, this which moves. It has a magnetic platter. Okay? This one has a magnetic platter. It writes it in the circles. Okay? It writes it in the circles. That's why it moves to the circle to circle. So it moves to this circle. Now it can read this circle, and if it goes here, it moves. It can read this circle, and so on. And it is magnetic. Magnetic in the sense means how the data is stored. The data is stored in terms of North Pole, South Pole. Okay, it's moving as well. It's a moving platter. It has a motor which makes it move, and it has a motor which gets this head, read-write head, on a track, that which track it should read and which track it should write. And it is a magnetic, means it is storing data in terms of the North Pole, South Pole. It creates a magnetic field and aligns them. Say, for example, like this pen is having a point on the top and a cap on the bottom. Say this is 1. If I do it like this, it is 0. Because every time I want to store 0 and 1, this is what I want to do, binaries. I want to store, I need a 2-state device which can save me. For example, I want to write a whole movie on this wall. Okay, how I do it? Where there is 0, I will dig a hole there, and where there is 1, I will not dig a hole. So I can put up my whole movie on the wall, on this wall. Okay, I can put up a whole movie on this wall. And only thing is, when I read, I will see where that 0 was, where that 1 was, where was that hole, and where was not hole. This is how we do it on the CDs also, on the DVDs also. This is how we write pits and lands. And here we write in terms of magnetic directions, north, south, south, north. So this head will sense it, in which direction that north, south is or south, north is. Accordingly, electric circuit will convert it into 0 and 1 in terms of voltage. So now there is a lot of conversion going on. There is from the magnetic side to the electric side. There's a conversion needed. So that's why it is slow, but it is cheap. Okay. So it is slow, but it is cheap. So if it is cheap, I can afford to have a big hard drive. So that is why we have memory hierarchy. So question comes in a mind, why memory hierarchy? I'm explaining again. Afrin Zarif has just come up. Now the question is, why the heck memory hierarchy, right? Why not we have some which is very fast memory and loaded a big memory very fast and big in my laptop or in my system? Why the heck I need this magnetic device which is very slow? For this and processor, the speed difference is like I'm telling you, it is like 1 year. It is like we are waiting for 1 year for something. It is like that, the speed difference. That is in nanoseconds, 1 billionth of a second. Your processor works 1 billionth of a second. That's huge. That's unimaginably small time. Okay, that's very fast. And this one, microseconds, it is very slow. If we consider the processor and this hard drive, it is damn slow. Why we need this then? Why we need this? Okay, because we have to build a system for the masses. We have to build a system for you and me. I cannot afford to buy a system which is, say, 10 lakh rupees a laptop. So I can't buy it. So there is a market. We have to, and so not only a business, but we have to reach, these systems should reach to the masses. These systems should reach to the people around the world. They cannot afford costly system. They cannot afford to have if I will buy a super computer, it's okay, it's fast. It's nothing like that on the planet. But can I afford to buy that? Okay. And there are people who have limited usage. They don't play games even. They don't even know what the computer is all about. Then they have a laptop and just doing some Word and Excel and all. They don't need at all that fast system. So this is what is called the trade-off. We call that as a trade-offs. So in a memory hierarchy, we have trade-offs. And are we able to actually design a system which is faster as well as cheaper? This is what we want.
We want a faster as well cheaper. So what we try to accomplish here is, I will give just a one dialogue. Let me put up the annotations here. What is notation? Yeah. So I want elephant. At the same time, I want elephant. That means huge, big space, big memory, big RAM, or a big hard drive. This is the hard drive which is giving me the huge space. But at the same time, Junit Sophia has come up. At the same time, I want the speed of rabbit. Because I know if I want to have an elephant, it's going to be slower. Elephant will not move fast. But I want elephant as well as rabbit. I want elephant which works like a rabbit. So that is why the technology comes up, the memory hierarchy comes up. That we are having an elephant, the big space, but we are having the speed of rabbit. Both. The technique we are using, it gives us both. It gives us the storage of elephant and it gives us speed of rabbit. But how is it possible? That it is possible because of what's called as a reference of locality. Reference of locality. You wonder why in C, the go-to statement, which was in a C, is not used in C++ and other language. Because of reference of locality. Because of our memory hierarchy system. Because if we have a go-to, allow the go-to of a C, then this memory hierarchy will of no use. We will have an elephant, but we won't have a speed of rabbit. So we want to understand this now, right? Everybody with me? Now, Yes, sir. Okay, thank you. So what does it mean that I want to have an elephant and a rabbit because of reference of locality? So what is this reference of locality is that when we write a code, This is my code, and it is say 1,000 lines of code. So even though it's 1,000 lines of code, okay, my processor at a time is working on this line only. It's working on a single line only, right? It may be 1,000 lines of code, but it is working on this piece of information. Say, for example, you have to build a house. You have a mason who is building a house. He needs 20 bricks, trucks of bricks. He needs 10 trucks of maybe cement and the other things. But at a time when he's working on a single brick. He's not working in a, he doesn't need everything right now. You understand? So if I do what I say in my locality in Asora where I live in, where is 2 crore rupee, even it has gone to the 5 crore rupee and a land here. Okay. If I am saying that कि भाई मैं सारा मटेरियल यहीं पे डालूंगा, यहाँ मुझे घर बनाना है, यहाँ मुझे मैसन को है, so I have to buy some 5 crore rupee land first, and then I will start making a house because मेरा मटेरियल वहाँ है. लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई ये मत कर तू, क्योंकि तेरा जो रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी है, मतलब जो तेरा मैसन है उसको एक ब्रिक एक टाइम चाहिए, वो एक ब्रिक पे काम करना चाहिए, चाहे आपको 100 गाड़ियां क्यों नहीं लगेंगी ट्रक्स की, मतलब 10,000 ब्रिक्स लगेंगी आपको या 20,000 ब्रिक्स लगेंगी, लेकिन मैसन काम कर रहा है एक या दो ब्रिक्स, एक ब्रिक पे काम कर रहा है ना. अगर आपके मल्टी कोर भी है तो मान लीजिए आपके 3 मैसन्स आने 4 मैसन्स लगाए हैं, वो सिंगल टाइम में कितने ब्रिक्स पे काम करेगा? 4 ब्रिक्स पे. तो हम कहते हैं कि छोटी सी मेमोरी रखो जो कि फास्ट होगी, जो कंपैटिबल आपके मैसन के साथ है, जो कंपैटिबल यानी कि प्रोसेसर के साथ जो कंपैटिबल उसके स्पीड के साथ होगी, वो एक छोटी सी मेमोरी रखो और उसमें उतना माल उतना मटेरियल लाके रखो जितना उनको जरूरत है. अभी वो इस ब्रिक पे काम कर रहा है, नेक्स्ट ब्रिक उधर पहुंच चुकी है, 10-15 ब्रिक्स आपने 20-50 ब्रिक्स आपने लाके रखी है, छोटी सी जगह है. तो जो मेरा लैंड यहाँ पे होगा, मैंने एक छोटी सी लैंड है उस पे रखनी है. जो बाकी जो 20-50-100 ट्रक्स हैं वो मैं कहीं दूर रखूंगा जहां पे स्पेस मुझे मिलेगी सस्ती. ठीक है, या तो मुझे काम करना है कि मुझे यहीं पे यही जमीन खरीदना है जो कि 5 करोड़ में आ जाएगा, तो फायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी है. क्योंकि मेरा रेफरेंस लोकेलिटी क्या है कि भाई आप जो जिस पे काम कर रहे हो प्रोसेसर, उसके बाद वाली ही इंस्ट्रक्शन होगी. जो अगर इस इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वही होगा इसके बाद, उसके बाद यही होगा. तो इस 1000 लाइंस ऑफ कोड में आप इतना सा उठा के एक फास्ट मेमोरी में रखो जो कि प्रोसेसर के नजदीक होगा,
और कंपैटिबल होगा, जो प्रोसेसर की स्पीड है उसके कंपैटिबल होगी, ताकि उसको टाइम ना लगे, ठीक है ना। तो ये बाकी सारा कोड आप हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं, और हार्ड ड्राइव से उठा के जब जब ये कर रहा है तो बाद में आप ये उठा के लगा सकते हो यहाँ पे, तो सीपीयू यहाँ से काम कर रहा है, उसको नहीं पता हार्ड ड्राइव, उसको पता सारा मेरा इधर ही है। जैसे मैसन मेरा अभी काम कर रहा है ब्रिक के ऊपर, उसको इस ब्रिक्स साइड में है, 20 ट्रक्स ब्रिक्स कहाँ है, बाहर, लेकिन उसको नहीं पता 20 ट्रक्स का, वो हम उसको बताते नहीं है, उसको बताते हैं तेरे पास इधर ही है, तू कर काम अपना, वो रुकता नहीं है, इज नॉट स्टॉपिंग, क्योंकि उसको जितना चाहिए वो है। तो हु इज टॉकिंग? Hanan Shaukat, yes. Any question? No, sir. No, sir. Hanan Shaukat. Okay, it must be by mistake. Otherwise, if anybody, I will remove. But it must be by mistake. Okay. Others also try to put on your camera. Okay. Like Adil Rasool and Kazim is putting up a camera, so I could see them easily. It's really nice. It sees that I'm teaching everybody. So try to put on your camera. Okay. Because I'm telling you, after 3-4 days, when I get to know you people, I will start removing people. Anyways, so do you understand getting the concept, what I'm saying, trying to see why memory hierarchy? So this gives us memory hierarchy, means you are keeping the slower systems. One second. What is the notation? Clear. Why is it not clearing? Clear all drawings. Okay. So what is the objective of reading the memory hierarchy? And why we do memory hierarchy? How we do memory hierarchy? Because of the size, cost, and speed. I'm telling you that I want the speed of rabbit, but I want the size of an elephant, and I want cost balanced. It should not be costly a system. Yeah, I will make costly system, not a problem. But if you have that kind of a scientist, they want very fast brandished systems, I will give them that kind of system. But if I have to make a general system which will reach to the masses and which will not be slower in any case, okay, will not be like that slow that my processor is only waiting. Because of reference of locality, I am getting the speed of rabbit. But necessarily, I don't need to have the high technology RAMs and ROMs around the CPU. And that too huge, maybe जैसे आपके 2 terabyte hard disk है, I cannot afford to have a 2 terabyte RAM. And it will be of no use basically, because मेरा processor उसको काम ही नहीं करना है. In the meantime, जो वो काम करेगा, एकदम मैं यहाँ से ला सकता हूँ. So efficient systems. तो कंप्यूटर साइंस जब भी आप पढ़ोगे, चाहे आप प्रोग्राम करोगे, कोई प्रोग्राम करोगे, हम एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं एल्गोरिथम्स? Because we want to get an efficient algorithms. आप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो ऑप्टिमाइजेशन? Because you want optimized solutions. चाहे वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो शॉर्टेस्ट पाथ हो, ठीक है? Every time we want efficient. What does efficient mean? Efficient does not mean कि आपने एक बहुत कॉस्टली सिस्टम लाया और ये एफिशिएंट हो गया. एफिशिएंट ये नहीं होता. एफिशिएंट ये होता है कि आपने चीप सिस्टम लाया और काम कर रहा है फास्ट की, वो होता है एफिशिएंट. ठीक है? आपने कोई चीज महंगी लाई और कह रहे हैं ये तो अच्छा काम कर रहा है, ये एफिशिएंट कहाँ हो गया? एफिशिएंट उस बंदे को बोलते हैं, उस चीज को एफिशिएंट बोलते हैं जो कि सस्ते में बेस्ट काम करे. ठीक है ना? तो वो हम करना चाहते हैं. जैसे आपका कोड है, जब एल्गोरिथम्स आप लिखते हो, सी प्रोग्राम हो या C++ हो, जावा हो, कोई भी कोड हो, जैसे आपको सर्चिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, हम कहते हैं कि हमारा कोड जो ना बड़ा छोटा होना चाहिए, लेकिन काम बढ़िया करना चाहिए. कोड छोटा, काम बढ़िया. कॉस्ट कम, काम बढ़िया. कॉस्ट कम लेकिन स्पीड रैबिट की. पास में आती है. ये होता है एफिशिएंट. दैट इज व्हाई द साइंस कम्स इन. द साइंस डज व्हाट? जैसे अब मैं आपको बताऊंगा, सिंपल एग्जांपल दूंगा फिजिक्स की. आप एक बहुत बड़ा लोड उठाना चाहते हो, बहुत भारी चीज उठाना चाहते हो, तो साइंस बता रही है, साइंस क्या बता रही है? एफिशिएंसी बता रही है कि आप फोर्स कम लगाओ, फोर्स लगाओ कम, लेकिन वेट उठाओ बहुत ज्यादा. कैसे? आप लीवर को इस्तेमाल करो. एक सिंपल एग्जांपल, लीवर इस्तेमाल किया, जब लीवर को मैंने फोर्स आर्म को इंक्रीज की, जब फोर्स आर्म इंक्रीजेस, आई नीड ए वेरी लिटिल फोर्स टू लिफ्ट समथिंग.
जो लीवर होता है ना, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट इस बारी चीज को उठाऊंगा मुझे बहुत एनर्जी लगेगी, लेकिन एफिशिएंट होना मीन्स व्हाट, यू यूज लेसर फोर्स बट यू लिफ्टिंग बिग थिंग्स. The same way in a computer science, or it is coding, or it is making systems, it is making whatever. Okay, we are trying to be efficient, we are trying to optimize things. So that is why we are in a memory hierarchy. We are trying to optimize our things so that we have a size of bigger. The elephant, what does it mean? It doesn't mean you write an elephant, it's just an example I'm giving. That size should be bigger. That means you can occupy more programs, more, you have a lot of space for the programs, but at the time it is very faster. Because if you use only hard disk, you don't use the memory hierarchy, you use only hard disk, it will be very slow, your system will die doing some job, right? So you have to use memory hierarchy. So memory hierarchy, you have a hard drive, and then you have a RAM, you have a cache, you have registers. We'll talk about that. Does it make sense? Firstly, everybody? In a chat, you can open a mic, or in the chat, you can say yes, sir, no, sir. So I understand that you are getting things properly. Anyone having issues? Does it make sense what I'm saying? Yes, sir. Because it should make sense. Whatever we are reading, it should make sense, as if we are doing it. We are evolving at as a memory hierarchy, and you should know exactly why the heck we are doing the memory hierarchy. Now, in a memory hierarchy, firstly we have the main memory and the auxiliary memory. The hard drives and all, they come in a secondary or auxiliary memory. Your RAM, ROM, okay, they come in the main memory. We call them as a main memory. Sometimes we call them as a primary memory. Okay, we can call them as a primary memory also, or main memory also. And the secondary or auxiliary memories are something like hard drives and all, which are very slower. Okay, but they have very high capacity. These guys are slow but high capacity. The RAMs and all, they are faster but low capacity. And because of reference of locality, I will not have any issues. Daniel Beg has come up. Listen, sometimes when I teach now, I get engrossed in teaching and I miss somebody's come up. Okay, then what you do is you have my number. You just give me a small subtle missed call, small one, just like a knock at the door. Because sometimes like Daniel has come up and I couldn't, मैं यहाँ से पढ़ा रहा था ना, तो यहाँ से नजर नहीं पड़े मुझे, ऐसा हो सकता है. तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप मुझे थोड़ी सी मिस कॉल देंगे, उससे मुझे पता चलेगा कोई दैट्स लाइक अ नॉकिंग एट द डोर, उससे पता चलेगा कोई बंदा वेट में. ठीक है, अच्छा ये देखें आप, ये मेमोरी हायरार्की की डायग्राम. ठीक है, इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. Good. Thank you. Now if you could see in a triangle, on the top it gets smaller, smaller, smaller. On the bottom it gets fatter, fatter, fatter. Right? So this is the memory hierarchy diagram. So on the bottom it is a fatter, that means big storage. But on the top it is small storage. But from the top it is faster. Okay, from the top it is faster, from the bottom it is slower. But from the bottom it's fatter and the top it is thin. So means जो आपकी कैपेसिटी है वो नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है. तो पहला ऊपर सीपीयू आपका है ब्लैक में, जो सीपीयू के पास अपनी मेमोरी है, they are called registers. What is it called? Processor registers. They are the fastest, the ultimate. Whatever the ultimate technology we have, the fastest one, it belongs to the processor, inside the processor, part of a processor. जिसके ऊपर वो काम करता है, the memory on which it works are called registers. ठीक है, जैसे accumulator है उसके पास instruction pointers हैं, ये सारे registers के पास. ठीक है ना, उस processor के अंदर, this is the ultimate technology we have. They are the fastest ever possible. ठीक है ना, so that's why they are saying super fast, but they are super expensive, and their capacity is tiny. Why capacity is tiny? Because we cannot afford to have a big registers. क्योंकि हम हार्ड डिस्क नहीं लगाएंगे, सारा रजिस्टर का ही लगाएंगे, रजिस्टर टेक्नोलॉजी का ही लगाएंगे. तो सिस्टम आपका 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख भी हो सकता है, एक सिंपल सिस्टम. तो और फायदा कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि आपने वो सारा, जैसे मैं कहूंगा कि मैंने 5 करोड़ का जमीन खरीदा आप यहीं पे मैसन के लिए, और मैंने 20 ट्रक्स वहां पे डाली,
लेकिन प्रोसेसर किस पे, मैसन किस पे काम कर रहा है, एक ब्रिक पे, फायदा क्या आया, फायदा आएगा कुछ, क्योंकि वो बंदे को फिर भी एक ही ब्रिक पे काम करनी है ना. So it doesn't make, it's not efficient. This will not be efficient. This will be costlier, but not at all efficient. It's not required. So that is why we will not allow to have a big registers, because it will be of no use. We will only have that much of registers which is required at a time to efficient processing it. Okay? We may increase a little bit so that our processor will not have any glitches, but we will not make it like a 2 terabyte so that it will be huge, costly, but of no use. आप सारा का सारा सीपीयू में ही डाल दोगे, उधर ही इतनी मेमोरी रखोगे आप, लेकिन फायदा कुछ नहीं आएगा. ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेसर जो है, अगर आपके पास सिंगल कोर सिस्टम है जिसमें एक ही प्रोसेसर है, वो एक इंस्टेंस में काम करेगा. अगर आपके पास ड्यूअल कोर या क्वाड कोर या मान लीजिए 50 प्रोसेसर भी आपके पास है, वो 50 लाइंस ऑफ कोड पे एट अ टाइम काम करेंगे, नॉट द होल थिंग. It doesn't make any sense to have a huge and costly registers and cut all this downside memory. So we have to adapt the elephant, but storage of a speed of a rabbit by using this hierarchy. Then after processors, we have a cache. Now cache can be inside the processor also, close to the processor, on the, not inside the processor, but on the chip, same chip. You can share the chip. Say for example, this is the chip of a processor, and on the same chip is the cache. That's what's called as a level 1 cache, L1 cache. And sometimes पहले हमारे पास कैश होती थी बिल्कुल चिप बाहर, प्रोसेसर चिप ये थी, कैश की चिप उसके साथ थी. But cache is a very fast memory which is compatible, neck on neck with the processor. That's called cache memory. And we have to read about the cache management also, how we manage the cache, like set associative cache mapping and all. We'll see that later. Now we have L2, L1, L3 caches. L1 will be on the same chip of the processor. Okay, this is the processor. It will have its own memory. What is that called? They are called registers. Now on the same chips पे processor है, वहां पे L1 cache होगी, then बाहर L2, फिर L3. हमने इसकी भी हायरार्की बनाई है, L1, L2, L3. So उससे क्या होगा कि मैं यहाँ से लाता जाऊंगा and I put it in the L2 cache, L3 cache, that I put a L2 cache, then I put an L1 cache. So processor is all the time accessing L1 cache. Now if it misses, if something is not there, अब go to क्यों आप हमारे पास, क्योंकि go to जो C का था वो क्यों बकवास है, उसको क्यों हमने हटा दिया बाकी प्रोग्राम लैंग्वेज में, क्योंकि go to क्या करता है काम, क्योंकि मेरी रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी बताती है. देखिए ये बात समझिए आप, मेरी जो रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी बता रही है कि अगर मैं ये लाइन ऑफ कोड कर रहा हूँ, उसके बाद ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, सो आई कैन हैव दिस चंक इन द कैश. फॉर एग्जांपल L1 कैश में मैंने डाल दिया ये चंक. अब CPU is taking this instruction, one instruction that takes second thing. लेकिन अगर वहां पे go to आ गया, आपने go to किया, लाइन नंबर 1000 पे आप चले गए, तो जो भी आपका ये ब्लॉक था, अब जो आपने go to कर दिया वो तो है ही नहीं है ना अब उधर. You understand? क्या वो वहां पे है, क्योंकि go to जब आपने किया, अब आपको कौन सी लाइन करनी है पता नहीं कौन सी, जहां लेबल आपको ले जाएगी go to. तो जो आपने चंक उठा के कैश में डाला था, या ये ऐसा हो गया कि मैंने 20 ब्रिक्स लाई थी यहाँ पे और मैसन कर रहा था ब्रिक्स पे काम, अब go to आ गया, go to कहता है पेंट कर, ये सारा जो है अब मुझे ये करना ही नहीं है, तो अब ये सारा खाली करना है, जो भी ब्रिक्स मैंने लाई खाली करो, अब पेंट लाओ, तब तक प्रोसेसर बैठ गया. ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई go to is not allowed in the other program language. फंक्शन कॉल में भी ऐसा ही होता है, बट फंक्शंस आपने एक बार कॉल की, एक बार जब आपने फंक्शन कॉल की तब यही होता है, लेकिन जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो हमें पता है कि आप जो फंक्शन के अंदर ये चीजें हैं अब यही एग्जीक्यूट होगी. You can put up that block in the cache. You can put that block in the cache. अब फिर भी reference of locality उसमें काम करेगी. What is the reference of locality? That if CPU is doing this instruction, now जो इसकी locality में होगा, जो इसके नजदीक होगी दूसरी instruction, अब वो एग्जीक्यूट होगी, तो इसलिए वो ब्लॉक हम उठा के डालेंगे कैश में. Does make sense? What we do is actually is हमारा बड़ा सा एक प्रोग्राम होता है, वो हार्ड डिस्क में होता है, उसमें से एक चंक पे काम हो रहा है, वो हम लाएंगे इन द only 10 minutes is telling us, उसमें से एक चंक हम लाएंगे रैम के अंदर, और रैम में अब इतना सारा आया, उसमें से एक चंक उठा के जो मोस्ट प्रोबेबल है जिसपे CPU काम करने वाला है,
वो उठाएंगे, डालेंगे कैश के अंदर, और कैश से हम फिर एक एक करके देंगे किसको, सीपीयू को। ये कैश से ले रहा है वो, जैसे मैं कह रहा हूँ मैसन, वहां पे मैंने ट्रक डाल दी बाहर, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ब्रिक्स उसको डाली, अब वो उस पर काम कर रहा है, वहां से आ रहा है वो, ठीक है। अब जो ये सीपीयू के नजदीक जो कैशे हैं या फिजिकल मेमोरी, जो हम रैंडम एक्सेस में रैम जो है हमारे पास है, ये फास्ट है, लेकिन जो ही आप नीचे चले जाएंगे फास्टनेस कम होती जाएगी, लेकिन हम स्पेस बढ़ाते जाएंगे। अब कैशे केबीज में है, लेकिन आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, रैम, वो जीबीज में है आजकल, लेकिन जो आपकी हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट्स में है। ओके, दे आर इन टेराबाइट्स, दिस इज ह्यूज। जो आपकी नीचे मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, दैट्स इन टेराबाइट्स, दिस इज इन जीबीज, दिस विल बी इन द केबीज। मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है, दिस इज एक्सटर्नल, this will be in the GBs, the physical memory RAM, which is also called as a primary memory. Okay, और cache will be in the KBs, आजकल MBs में भी आ जाती हैं cache, and then we have the registers. The fastest ones are, which one are the fastest, tell me? Registers, which are inside the CPU. Next is cache memory, which is close to CPU and neck on neck as compared to speed with the CPU. Then there is a RAM, okay, random access memory, which is again faster, but not that fast registers, but not as slower as the hard disk, because hard disk is the ultimately slower. Then there comes the solid state devices, like solid state device like SSDs. आजकल जैसे मेरे लैपटॉप है, इसमें SSD है, solid state है, क्योंकि solid state में मैग्नेटिक नहीं होता, सॉलिड स्टेट फास्टर होते हैं हार्ड ड्राइव से। व्हाई? क्योंकि सॉलिड स्टेट में मैग्नेट नहीं लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। इसमें जो कन्वर्शन है फ्रॉम मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रॉनिक, जो इसमें स्पीड, वो कन्वर्शन में टाइम लगता है, वो सॉलिड स्टेट में नहीं लगता। जैसे आपकी फ्लैश ड्राइव है, सॉलिड स्टेट से काइंड ऑफ फ्लैश ड्राइव, जैसे आपके पास पेन ड्राइव नहीं होती जैसे वैसे होती है, तो सॉलिड स्टेट डिवाइस आर लिटिल फास्टर। देन देयर आर मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स, दिस आर मैकेनिकल। व्हाई वी कॉल मैकेनिकल? इसमें क्योंकि मूव हो रहा है, मोटर हेड मूव हो रहा है, लाइक दैट, यू नो, ये मैकेनिकल है हार्ड ड्राइव्स, ओके, एंड दे आर वेरी स्लोअर, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे पास अगर ये बहुत बड़ी है, मैं इसमें रख रहा हूँ चीजें, लेकिन मैं थोड़ी प्रोसेसर इस पे काम कर रहा है, प्रोसेसर तो कैश से ले रहा है, जो उसको जरूरत है मैंने वो आगे कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कभी कि वो वही वहां नहीं हो, जिसे हम कहते हैं हिट एंड मिस, हम पढ़ेंगे डिटेल में कि अगर प्रोसेसर को नहीं मिला तो हिट हो गया, मिस हो गया, तो वो कैसे काम करेगा, वो मैकेनिज्म कैसे होगा, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन टू हैव अ मेमोरी हायरार्की, आई एम गेटिंग द स्पीड ऑफ अ रैबिट, but I am getting the space of an elephant, and my system is efficient, it's working like a rabbit, it's not like it's slower. Okay, does it make sense what I'm saying? Any questions till now? Because we have a little time left, I would like that you ask the questions if you have. So little recap of it. If you have a question, you can ask, open up the mic and ask question, many you like, but each question should be relevant and it should be not off topic, it should be on topic. Not somebody tell me about the laptop, somebody tell me about the question about my specs. That's not gonna be, that's not gonna help. We should have a question coming up as per the subject, ठीक है ना, whatever we are, and that too whatever we are reading right now, not computer organization बड़ा चैप्टर है, बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें आप किसी और चैप्टर का पूछोगे, no, it should be pinpoint question about the topic if anybody has. So we are saying that in a hierarchy, that's what is called a hierarchy, because we have in the top something, then a bottom something, then a bottom something. This is what is called as a hierarchy. Okay, so on the top, सर क्या हम बता सकते हैं कि रैम फिर हमें एक अच्छा खासा साइज भी देता है और एक अच्छी खासी स्पीड भी देता है? यस, क्योंकि रैम 2 GB 4 GB 8 GB आप लगा रहे हो आजकल, ठीक है ना, तो उसमें साइज भी है, स्पीड भी है। लेकिन जब हम करेंगे ट्रू साइज की बात, कि यानी कि हमें बहुत मोटा साइज चाहिए, दैट इज द हार्ड ड्राइव ओनली, राइट। We will see the segmentation and all, we will see that hard drive is it acts like a RAM only. और हम बेसिकली करते क्या है कि हम सीपीयू को धोखा देते हैं, उसको बोलते हैं कि जैसे हार्ड ड्राइव में मेरे पास चीजें हैं,
हम जैसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, जैसे आप लिखे हैं यहाँ पे देखा होगा वर्चुअल मेमोरी हम कहते हैं। वर्चुअल का मतलब है कि ये है कि जो कि रियल नहीं हो, चीजें आपकी कैशे के अंदर, इसमें सीपीयू काम करता है। लेकिन सीपीयू को ये नहीं पता कि मेरे पास वो चीज है नहीं, उसको पता है सारा उधर ही है। सीपीयू थिंक्स एवरीथिंग इज देयर, क्योंकि इन द मीन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है, वहां से वो लाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डज दिस मैनेजमेंट, इट गेट्स थिंग्स so that CPU doesn't never waits, it doesn't have to wait, make it an efficient system, right? So we are saying in nutshell, we are saying that in a CPU there are the fastest ever technology what we have is called the registers, but we will not keep that bigger because it will make it costlier. So we have to keep these trade-offs, speed and cost and size. These trade-offs we have to keep in mind to build a very efficient system. We have to keep a balance, okay? And not because why we are having today's 8 GB RAM and all, because the RAMs become cheaper now. We afford to have 8 GB RAMs, okay? So that our system will come up, no 30K 50K systems only, otherwise it will become very costly. अगर हम इससे पहले लगाते, आजकल भी हमारा जो रैम में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, there are a lot of types, we will see them in maybe tomorrow, the types of RAM. What are the types of RAM? There are many types of RAM, okay? Then जो CPU के नजदीक मेरे पास है वो कौन है? कैश. It will not be, because we have to read the cache management, you understand? We have to read those things, we will read them in detail. This is just an intro, just a basic concept, keep in your brain why we have hierarchy and what is hierarchy. And then the cache also has a L1, L2 and L3 cache, and then there was like an AMD which started to have the cache L1 inside the chip of the CPU, the same chip of the CPU, so that it will be very faster. There are like the processors like AMD versus Intel versus, they have these differences, little bit differences, how they manage things, how they put organize things, okay? Then comes the physical memory, what is also called as a primary memory, that is your RAM. We also have a ROM, we have the EEPROMs, we have a lot of things, we will discuss them tomorrow. Then there are the secondary or auxiliary memories, like we have the solid state devices, like we have the hard HDDs, and hard drive is the magnetic, and one time will come when this will get obsolete. This will not be the future, they will go off because of this magnetic to electric conversion. It takes a lot of time, that makes them very slower. So SSD has already come up. For example, if you see my system, it is having SSD, solid state device, which is electronic, purely electronic, no magnetic, okay? We may discuss these things also, or I may put up an assignment for you for these things. And if you can see on the left side, there you could see EDO, there is an SD RAM, there is DDR, SD RAM, RD RAM, rhombus dynamic, synchronous dynamic, double dynamic, and so on, static dynamic. Now SD RAMs, basically this technology we use for the cache, okay? Maximum times the cache memory we use the static RAMs. Cache is nothing but a static RAM basically, okay? There are, because RAMs are two types, static and dynamic. Now these are all types of dynamic RAM, because it's static dynamic, it's not SRAM. If you say SRAM, that means cache. Has it given? No, it has not written it, but cache is static RAM. In a static RAM, we have a dedicated circuit. The difference between the static RAM and the dynamic RAM is the main first difference is, in the dynamic RAM we have, these are volatile, as you could see somewhere. Volatile. These are volatile. Volatile means because they are made of capacitors. Capacitors store charge. You have to store something, 0 or 1, it stores as a charge. Now in the few times sometime happens, it loses its charge, so you have to refresh it. That's why it's called non-volatile. Power gaya तो ये सारा lose करेगा. Even अगर power है भी तो ये फिर भी lose करता है charge, इसको फिर से वापस करना पड़ता है. That makes them little bit, you know, they are inexpensive basically. थोड़ा सा inexpensive, static RAM से थोड़ा सा कम expensive है, but जो static RAM है, they have a permanent thing. You have put something there, it's not a volatile. We'll discuss them tomorrow.